Okay, so in the previously class we solved the exercise 4.2, राइट हमने प्रीवियसली एक्सरसाइज एक सॉल्व की थी 4.3 सॉरी. देन after it we are going for the next topic, that is the subtraction of 3 digit by from a 3 digit number. आपने अभी तक क्या सीखा? 2 digit by 2 digit subtraction, then 2 digit by 3 digit subtraction. Now we are going to solve how can we subtract 3 digit number from a 3 digit. अभी दोनों क्या होंगे? 3 digit के ही नंबर होंगे और फिर आपको सब्ट्रैक्शन करना है. आई एम थिंकिंग दैट इज इजी फॉर यू. ये आपके लिए इजी होगा क्योंकि तो दोनों ही 3 digit के नंबर है, तो अरेंजमेंट में भी आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वी कैन सी द एग्जांपल ऑफ विदाउट बोरोइंग, जिसमें बोरो का नहीं आएगा. फर्स्ट एग्जाम्पल आई विल बी शो यू फर्स्ट. पहले हम सीखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे. अभी कोई नहीं लिखेगा, अभी सिर्फ देखना है. फर्स्ट एग्जाम्पल इज 721 माइनस 511. फर्स्ट एग्जाम्पल इज, आप यहाँ पे देखेंगे कौन सा एग्जाम्पल है? 721 माइनस 511. So firstly, according to the rule, we have to arrange these numbers. These are the given in the horizontal form. आपको ये horizontal form में दिया हुआ है, तो आपको उसको पहले, सबसे पहले रूल क्या है सब्ट्रैक्शन का, कि उसको वर्टिकली उसके प्लेस के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे. We are learning, so I'm representing the 721 base 10 blocks. 10 ब्लॉक का यूज करके मैं 721 को रिप्रेजेंट कर रही हूँ. 721 means there are the 7 blocks of 100, 2 blocks of tens and 1 blocks of ones. Now we have to start the subtraction from the ones place as per the rule. अब जब subtraction कर रहे हो, जैसे addition में करते थे हम, सब्ट्रैक्शन को भी आपको वंस प्लेस से स्टार्ट करना है. 1 माइनस 1. यहाँ पे देखो, प्लीज म्यूट योर सेल्फ बेटा. यहाँ पे वंस प्लेस पे 1 है, सो रिमूव इट. So what will be the answer? Nothing is there on the ones place, so put 0. Now tens place subtraction, 2 minus 1. 2 minus 1. So यहाँ पे 2 blocks है, उसमें से एक मैंने निकाल दिया, तो how many are remaining? 2. So from 2 tens there is only 1 10 is remaining. So 2 minus 1 equals to 1. Now टर्न ऑफ 100 प्लेस. 7 माइनस 5, मतलब हमें 500 ब्लॉक्स को रिमूव करना है. ये रहे आपके 700 ब्लॉक्स, उसमें से आपको 500 ब्लॉक्स को रिमूव करना है. सो आई एम गोइंग टू रिमूव इट. 1 2 3 4 and 5. So how many are remaining? 1 and 2. So 7 minus 5 equals to 2. So what is the answer? 721 minus 511 equals to 210. There is a no value on the ones place, so put 0. 721 minus 511 equals to 210. Now I request to every student, please open your maths notebook and the write down heading. I am going to share a one notebook page. Write down the heading subtraction of 3 digit numbers. Write down the heading in your notebook.
subtraction of 3 digit. What are you doing, Jasmine? Write down the heading. Subtraction of 3 digit numbers. Write down the heading. Subtraction of 3 digit numbers. अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा या फिर नहीं दिख रहा या फिर आपका नेटवर्क इश्यू है, स्क्रीन ब्लर दिख रही है, तो आप वेट करोगे हमारी क्लास खत्म होने तक का। मैं क्लास खत्म होते ही आपको उसका फोटोज भेज दूंगी। सॉरी। नाउ राइट डाउन द हेडिंग, राइट डाउन एग्जाम्पल 1. Write down example 1. 658 minus 425. Write down 658 minus 425. ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है। 658 minus 425. So firstly, what should we have to do? We have to arrange it vertically. 658 minus 425. Now write down the places: ones, tens, hundred. Ones, tens, hundred. Start the subtraction from the ones place. यहाँ से आपको स्टार्ट करना है subtraction. 8 minus 5. 8 minus 5. 3. Then टेंस प्लेस सब्ट्रैक्शन. 5 minus 2. 5 में से 2 को निकाल देना है, तो कितने रहेंगे? अगेन इट्स अ 3. नाउ 100 प्लेस सब्ट्रैक्शन. 6 minus 4. 6 minus 4, 2. So your answer is 233. Write down. Answer is 233. कंप्लीट करना है जल्दी से नोटबुक में, ताकि हम दूसरा एग्जाम्पल भी देख पाए। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, जिसका हो गया होगा वो खुद से ट्राई करने की सॉल्व करेगा। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सेकंड एग्जाम्पल. 939 minus 514. 939 minus 514. So let's solve it. So arrange this for
First, arrange the numbers vertically. 939 minus 514. So start the subtraction from the ones place. 9 minus 4. 9 minus 4. 5. 3 minus 1. 3 minus 1. 2. 9. Then 100 place subtraction. 9 minus 5. 9 minus 5. 4. Answer is 425. अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू कर पा रहे हो, लिख पा रहे हो, दैट इज गुड थिंग. कंटिन्यू विथ मी. Otherwise, I will be share the photos of this in your WhatsApp group, so you will be completed from that. अगर नहीं हो रहा है तो आप वहां से हमारी क्लास खत्म होने के बाद जब मैं फोटो भेजूं तब वहां से भी कंप्लीट कर सकते हो. ठीक है, अगर आप मेरे साथ नहीं कर पा रहे हो तो. क्या बेटा? हाँ तो करोगे साथ में. मैं तो बोल रही हूँ. वेरी गुड. देखो अब मैं आपको क्या बोल रही हूँ, आप सिर्फ क्वेश्चन ही देखो, फिर खुद से ट्राई करो, फिर आंसर चेक करो, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी वाली. ओके. नाउ अभी हमने क्या देखा? वी आर सी द एग्जांपल ऑफ सब्ट्रैक्शन थ्री डिजिट नंबर्स विदाउट बोरोइंग. अभी हमने जितने भी एग्जांपल देखे वो सारे विदाउट बोरोइंग के थे. नाउ वी आर गोइंग टू सी द एग्जांपल ऑफ विथ बोरोइंग. फर्स्ट आई विल लर्न यू, देन यू हैव टू राइट. अभी किसी को नहीं लिखना, अभी कोई नहीं लिखेगा, अभी सब देखेंगे. राइट? ओके. अभी हमने एग्जाम्पल देखे. वी आर सी द थ्री एग्जाम्पल्स, दैट इज द एग्जाम्पल्स ऑफ विदाउट बोरोइंग. सब्ट्रैक्शन हमने किया लेकिन वो क्या था? विदाउट बोरोइंग का था. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न सब्ट्रैक्ट द थ्री डिजिट नंबर्स फ्रॉम थ्री डिजिट नंबर विथ बोरोइंग. अभी तक बोरो नहीं आया था, अभी बोरो आएगा. नाउ नोबडी हैव टू राइट, जस्ट लुक ऑन द स्क्रीन. सिर्फ आप देखोगे, पहले हम सीखेंगे, फिर हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. राइट? नोबडी हैव टू राइट इन द नोटबुक. फर्स्ट एग्जाम्पल, 436 minus 328. First example is 436 minus 328. So according to the rule, we have to arrange the numbers vertically according to their places. Place भी लिखनी है आपको यहाँ पे 100 tens place. Then we are learning it. So firstly I am arranging the 436 using the tens blocks. So first 436 means 400 blocks, 3 tens blocks and 6 ones blocks. Now as per the rule we have to start the subtraction from the ones place. हमें कहाँ नहीं लिखना अभी, हमें कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? वंस प्लेस से सब्ट्रैक्शन को स्टार्ट करना पड़ेगा. 6 minus 8. You know that 6 is the smaller than the 8, so we cannot subtract it. So for this subtraction we have to take a borrow from the previous one, tens place. टेंस के पास है जो 3 टेंस है उसमें से 1 टेन के पास से हमें बोरो लेना पड़ेगा. So let's take it. So here you can see we can take it 110 and converted it to the 10 ones. Now it's a 16. 2 will be remaining on the tens place and on the ones place 6 already there and we are putting a 10.
so it's a 16. 16 हो गए. Now we can subtract 16 from 8. So 16 minus 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. हाँ, how many are remaining? 16. बोलो. नहीं लिखना, नहीं लिखना, सिर्फ देखना है. 16 minus 8 equals to 8. Now second, tens place subtraction करना है. 2 minus 2. 2 minus 2 मतलब दोनों के दोनों निकाल देना है. So how many remaining? It's a 0. Now last 100 place subtraction बाकी रहा अभी हमारा. So 100 place subtraction 4 minus 3. 4 में से 300 को निकालना है. 1, 2, 3. So 3 are remaining. Sorry, 3 will be removed and 1 is remaining. So your answer is 1. So 436 minus 328 equals to 108. Now let's solve the examples. Open your notebook, write down the example number 3. Write down the example number 3. Wait, okay, write down the example number 3. 855 minus 471. 855 minus 471. So as per the rule, I am going to arrange it vertically. पहले आप देख लो, मैं लिखने का टाइम आपको दे रही हूँ. 855 minus 471. Now write down the places. Ones, tens, hundred. Ones, tens, hundred. Now start the subtraction from the ones place. 5 minus 1. 5 minus 1. 4. Then start the subtraction of tens place. 5 minus 7. 5 is smaller than the 7, so we have to take a borrow from the previous places, that is the 100. Right? So we are going to take a borrow from 8 for the 5. So cut it like this. Here 5 as it is. Now we are giving from 8 1 to 5. हम 8 में से एक 5 को दे रहे हैं. So it will be make a 15. Now 8 have a 7. Wait beta. 15 minus 7, 8. 7 minus 4, 3. So answer is 384. Complete this in your notebook. हम अपने आप को म्यूट कर लेंगे. Complete this in your notebook. Give you a 2-minute time. Please mute yourself. Humble request from my side. Please mute yourself. Mahi,
बेटा आप अनम्यूट कर के रखते हो तो आपके बैकग्राउंड में से आवाज आती है। ऐसा नहीं करना है आपको। Okay, let's solve the fourth one. Sorry. Fourth A is 763 minus 374. 763 minus 374. Firstly, we arrange the numbers vertically. 763 minus 374. Okay, start from the ones place. हम वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे। 3 - 4, 3 is the smaller than the 4, so we have to take a borrow from 6 to subtract the 3 from the 4. So firstly, cut it 3 as it is, give 1 from 6 to 3. So 1 will be here and 6 minus 1 equals to 5. Now 13 minus 4, 9, 5 minus 7. टेंथ प्लेस का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। 5 minus 7. 5 is smaller than the 7, so we cannot subtract. Again we have to take a borrow from the previous one. So cut it and take a borrow. 1 borrow from 7. 5 as it is. 1 borrow from 7. So it's a 15, and from 7 we have to subtract 1. 7 minus 1, 6. Now 15 minus 7. 15 minus 7, 8, and 6 minus 3, 3. So the answer is 389. So your answer is 389. Very good. Okay, I'm writing the fifth one. Please wait. Okay, right. If your work is done, write down the start solving the fifth one. Fifth is 809 minus 426. बेटा म्यूट कर लो अपने आप को। Arrange it vertically first. म्यूट करना है अपने आप को, अनम्यूट नहीं रखना है। So I am arranging 809 minus 426. Now what should we have to do? We have to start the subtraction from the ones place. 9
minus 6. 9 minus 6, 3. Now tens place subtraction. 0 minus 2. 0 minus 2. We cannot subtract because 0 is smaller than the 2. So for that purpose, we have to take a borrow from the 8. That is on the 100 place. So take a borrow. So here is 0. So what should you have to do in condition of 0? Put 0 as it is. जैसे हम नंबर्स के लिए करते थे बाकी नंबर्स के लिए कि हम यहाँ पे 1 लिख रहे थे, तो आपको यहाँ पे 0 के लिए भी ऐसा ही करना है. यू हैव टू राइट हियर अ 1 एंड हियर इज 7. 8 minus 1 7 हुआ ना. नाउ 10 minus 2. 10 minus 2. 8. 7 minus 4. 7 minus 4. 3. So your answer is 383. So your answer is 383. Very good, beta. Okay. So it's time for the homework. So I am writing here a homework. Mute yourself and start writing your homework questions. First, please mute yourself, beta. Don't be unmute yourself. Please, ma'am, we will be talk. First, I have to complete my work, then you can speak with me. First, 743 minus 532. ये आपका होमवर्क है. अभी क्वेश्चन लिख दो, बाद में सॉल्व करना है. सेकेंड, 876 minus 215. Third, 429 minus 376. Yes. हाँ. 527 minus 289. Please mute yourself. And the last fifth one is 640 minus 219.